Hello and welcome. Very good afternoon. You're watching Mirror Now. I'm Afrida Rahman Ali. We begin with the inputs coming in from West Bengal. Now, viewers would recall the controversial slogan of Gaddaro ko Goli Maro that put Union Minister Anurag Thakur in the dock during the Delhi poll campaign. Now, you see a resonance of that very same slogan in West Bengal during the campaigning. That infamous slogan, which rocked the Delhi elections in 2020, has made its way to poll-bound Bengal, with TMC supporters now raising the same slogan during the party's rally in Kolkata yesterday. And it can be heard loud and clear as viewers who listen in can easily make out the kind of slogan that is being raised there. That controversial slogan that was first heard during the campaigning for Delhi polls, it was first raised by BJP MP and Union Minister Anurag Thakur, is being repeated ad nauseum now in West Bengal. I am joined by Somnath Singh Roy, supporter of the TMC, on the phone line. Somnath Singh Roy ji, first of all, want to understand from you that why do you want to follow in the footsteps of the BJP? I mean, everyone knows that this was a slogan raised by Anurag Thakur and he faced a lot of flack for it. Why is the TMC echoing the policy or the kind of tactics that BJP employs during poll campaigning? देखिए मैम, पहली बात ये तृणमूल कांग्रेस ये स्लोगन को नहीं माना। पार्टी का स्लोगन ये नहीं है। आज पार्टी का जो लोग स्पोक्स पर्सन है वो लोग एकदम टीवी का सामने आके कल भी बोला था, आज भी बोला है, ये पार्टी का स्लोगन नहीं है। मेरा कभी कभी लगता है ये देखिए हिंदी में स्लोगन, ये जो बीजेपी से कुछ दिन पहले कुछ तृणमूल में ज्वाइन किया ना, ये लोग सपोर्ट, ये टीएमसी का रैली नहीं था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो रैली हुआ था कोलकाता में, कौन सी पार्टी का रैली था? कौन से पार्टी का रैली था जो रैली में ये स्लोगन सुनाया गया? अभी हम सब सुन रहे थे। कौन से पार्टी का रैली था, ये बता दीजिए। करने दीजिए। ये रैली कुछ सपोर्टर लोग दे रहा था। कोई ऐसा कोई मिनिस्टर लेके पार्टी का कोई प्रवक्ता ऐसा कोई ये स्लोगन नहीं दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा कभी कभी लगता है ये सब बीजेपी से जो लोग अभी तृणमूल में घुसा है वो लोग ही होगा। क्यों? बंगाल में ना हिंदी स्लोगन बहुत कम चलते हैं मैडम, और ये हिंदी स्लोगन मेरा लग रहा है बीजेपी से कुछ नहीं, ये आप पहले भी आपका यही रिस्पांस रहता है। जब जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ उस टाइम भी आपने, उस समय भी टीएमसी के जो भी आते हैं हमारे शो में यही कहते हैं कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की बीजेपी के लोग हैं, वो टीएमसी के फ्लैग वहां झंडा फैला रहे थे। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कैसे मान सकते हैं? टीएमसी के रैली में कुछ भी इस तरह का होता है, आप कह देते हो बीजेपी वालों ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया अपना रैली। इतने सारे लोग सारे बीजेपी के लोग हैं जो गोली मारो का नारा लगा रहे हैं वहां पे। मैम, पहली बार सबसे अच्छा लगा, आप लोगों को खराब लगा, हम लोगों को भी खराब लगा था जब एक सेंट्रल मिनिस्टर ये स्लोगन दिया था। अच्छा लगा, क्यों? कभी ऐसे लगते हैं ये सही होता है, तृणमूल वाले जो स्लोगन देते हैं वो खराब होते हैं। अच्छा लगा है अभी नेशनल चैनल भी बोल रहे हैं वो स्लोगन खराब था, नेशनल चैनल वाले। तो मैं कहना चाहता हूं ये सब तृणमूल का सपोर्टर है, पार्टी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। ये स्लोगन दूसरा बार होना नहीं चाहिए। पार्टी से ऑलरेडी जो इंस्ट्रक्शन है सबको दे दिया, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जब ये स्लोगन दिया था, आप जानते हैं कि उस स्लोगन के बाद जामिया में क्या हुआ? आपको पता है कि जब ये गोली मारो का स्लोगन और ये कैंपेनिंग हुआ उसके बाद की परिस्थिति आपको याद होगा दिल्ली में क्या हुआ, कितने लोगों की जान गई उसमें, और किस तरह का भड़काऊ बयान वो था जिससे माहौल, जो पूरा एटमॉस्फेयर वाज विशिएटेड स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ऑन। क्या आप चाहते हैं कि बंगाल में ये हो? बंगाल में नहीं होगा मैम। मैं तो वही बोलना चाहता हूँ आपको, बंगाल में ये स्लोगन जो लोग दे रहे हैं, ये लोग कुछ दिन पहले बीजेपी से तृणमूल में ज्वाइन किया है। ये पार्टी का स्लोगन नहीं है, ये कोई मिनिस्टर, पार्टी का लीडर ये स्लोगन नहीं दे रहे हैं मैम, फिर भी बोल रहा हूँ। नहीं, और ये दिल्ली नहीं है मैम, यहाँ पर ममता बनर्जी का राज है। यहाँ पर एक स्लोगन कुछ बीजेपी से आने वाले तृणमूल, कुछ नया तृणमूल कांग्रेस सपोर्टर लोग ये सब स्लोगन दे रहे हैं। नहीं, ये आप कह के अपना जो है जिम्मेदारी इसमें आप डाल नहीं सकते कि आपकी पार्टी के रैली होगा, आपका कैंपेनिंग होगा, उसमें इस तरह के नारे लगाए जाएंगे तो आप सीधा उसको बोल देंगे कि बीजेपी वालों ने किया है। दिस इज सर्टनली नॉट एक्सेप्टेबल। दिस वाज योर पार्टीज रैली इन कोलकाता
And in this particular rally, the kind of sloganeering that is heard is from TMC supporters. So there is absolutely nothing at the moment to suggest that people who are raising those slogans are from BJP. So please don't try to get away saying that. We are going to, in fact, try and get more inputs and more people to join in the conversation and give us other perspectives as well. But we are referring at the moment to a TMC rally in Kolkata that took place on the 19th of January, and people out there raising a highly inflammatory slogan, one that was used earlier during the poll campaign in Delhi. Priyanka Tibrawal, leader of the BJP in West Bengal, also with us. Priyanka ji, सोमनाथ सिंह रॉय का ये कहना है कि बीजेपी के कुछ एलिमेंट्स इन्फिल्ट्रेट कर गए और जो स्लोगन आपके नेता ने यूज किया था दिल्ली पोल्स में, वही स्लोगन इधर यूज किया गया है. ये टीएमसी का कोई नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है. सपोर्टर्स स्लोगन लगा रहे हैं, तो ये क्या करें? कि ये जो स्लोगन दिल्ली में यूज किया गया था वो नेशनलिज्म के फेवर में यूज किया गया था और कहा था देश के गद्दारों को. तो देश जो है वो सब राजनीति से ऊपर आता है हमारे लिए, और इनके लिए राजनीति ही सब कुछ है. देखिए, ये बहुत साधारण सी बात है, इसको समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि इनकी सुप्रीमो जो है वो स्टेज से खड़ी होके बोलती हैं कि मैं जो है बीजेपी की. लेकिन आप ये भी जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? आप गोली मारो को जस्टिफाई कर रहे हैं, गद्दारों वर्ड यूज किया है. अब कौन डिसाइड करेगा कौन गद्दार है? आप पहली बात तो आप अनुराग ठाकुर के स्लोगन को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, उस पे आप सहमत है? क्योंकि वहां पे जो शब्द थे वो गद्दारों को यूज किया गया था. लेकिन गोली मारने वाले आप लोग कौन होते हैं? आर यू गाइस सम सॉर्ट ऑफ वायलेंट फ्रिंज दैट यू वांट टू नाउ स्टार्ट दिस होल एनार्की प्रोसेस ऑफ एनार्की एंड शूट पीपल अराउंड? Not at all. You didn't let me complete. What I'm trying to say is I am not at all justifying any kind of violence. I am speaking about whatever I'm saying is in reference to the word Gaddar, where it was related to nationalism, and yahan it is related to politics. I am not in favor of any kind of violence or shooting. I'm again mentioning the same. But apart from that, you have to understand that it is the CM who was there on the stage, and then she from there, she said that I will send my people to the rallies of BJP. And you know what happened? They reciprocated immediately. There was a rally which was going on where they started hitting the BJP people, and some of them had to go to the hospital also. So who is giving them, who is emboldening them? It is the Chief Minister herself. That too also from a public platform, from a public meeting. Yes, Priyanka Tibrawal and Somnath Singh Roy, your parties and your leaders must understand there are cameras everywhere. Everything gets picked up. The entire sequence is visible. No one can get away by saying this was not our doing anymore, because the cameras really don't lie. Thanks very much for joining us, Somnath Singh Roy and Priyanka Tibrawal, with your views on the subject. Moving on, well, in the run-up to the West Bengal elections, freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose's legacy has become a new flashpoint between the TMC and the BJP. And ahead of Prime Minister Modi's visit to Bengal on the 23rd of January, the birth anniversary of Netaji's centre has announced that his birthday will be celebrated as the Parakram Divas, which means a day of valour. Now, this is a new terminology, a new branding that the BJP wants to do on Netaji's birthday. Mamata Banerjee's TMC called the move political opportunism and said that they will celebrate it as Desh Prem Divas. We must also celebrate 23rd January as Desh Prem Divas or Patriots Day, because I think that is the demand of the people of our nation. Family members had also requested the Prime Minister, the present Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, and even the earlier Prime Ministers we have requested. But I think we should go by what the people of India want. People want Desh Prem Divas. So I have already requested the central government. I've had a word with Prahlad Singh Patel ji. My colleague Tanima Bishwa is joining us on the phone line. Tanima, earlier we saw this whole one-upmanship to appropriate Rabindranath Tagore's legacy. This time it's Netaji. Both parties want to in some way claim Netaji's birthday and talk about it as a special occasion for the Bengalis. But give us the importance, the relevance and significance of this kind of rhetoric now that is dominating the discourse in Bengal.
That's what as you mentioned, Frida, that this is another flashpoint which we can see ahead of the Bengal elections in the state. And in fact, this has again triggered that conversation, or the aspect rather, whether or not Bengali items have suddenly become, something that has in fact escalated the political fight in the state. We can see that earlier as well, TMC had objected to BJP leaders talking about Anurag Thakur, or actually talking about Shantiniketan, visiting Vishwa Bharati. We saw that political fight also playing out, and now ahead of Netaji's birth anniversary, we can see again there seems to be a tug of war going on, where on one side we can see that the BJP or the centre has in fact decided that they want to celebrate the day as Parakram Divas, whereas TMC is objecting to the term Parakram Divas and in fact saying that they want to call it Desh Prem Divas, and that Desh Nayak is a term that they use for Netaji even previously, and that is the tradition that they want to continue with. Also, of course, taking a jibe at BJP, essentially saying that the party seems to be waking up to these things only ahead of the polls, and this is a poll prop, so to speak, on as far as they are concerned, which is the reason why they are objecting to this move. Nonetheless, as we can see, this is, of course, something that will be heating up the political space in Bengal even in the coming next few days as we proceed towards January 23rd, which is Netaji's birth anniversary. Afrida. Yes, so there will be a lot more action, Tanima, for sure. Thanks for joining us with the latest.